Assalamu alaikum, I'm Hina Ejaz and welcome to my show, Welcome to Pakistan. And as you know, I always welcome one foreigner in this show, and the person I'm going to be welcoming today is from the United States of America, but she has been here in Pakistan for the past 3.5 years. Now that's a pretty long period. What has she been doing here? Well, you might be able to recognize her. Well, let's remove the word might. You will recognize her because she is a performing artist. She has also been on national TV. In fact, her play currently airs on our national television. She speaks Urdu in a very, very fluent manner. You would be able to witness that today because the first time I heard her speak in Urdu one-on-one, it shocked and surprised me at the same time, but now I'm getting used to it. Her name's Gillian. She has appeared in a drama, in a TV play called Gori Ka Pakistan. So we have the Gori right here with us. Hi Gillian, how are you? I'm good. How are you? Thank you. बिल्कुल ठीक ठाक. आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ. आप सुनो. तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें उर्दू अच्छी आती है. On the other side, I have Kashif Anwar Sahab, former Vice Chairman for Lahore Chamber of Commerce and Industry, and also President, Friends of Economic and Business Reforms. बहुत सारी कारोबार से मुंसलिक इनसे भी बातें होंगी. जैसे कि आपको पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा इजाफा दिखा गया है कुछ अरसे में. आप मंथ बाय मंथ पे मत जाइएगा, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ अरसे से अगर आप कंपैरिजन करें. Also, a lot of foreign companies are looking into Pakistan. They're setting up businesses here, especially with the CPEC phase, how we're seeing Chinese investment come into Pakistan, how they're collaborating with us also. जी काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत सारी इस बारे में आपसे बातें करनी है और ये बातें करनी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सारे बायर्स और सेलर का इंटरेक्शन यहाँ पे होता है. यानी आप सेलर हैं और आपके बायर बाहर के हैं. पहले पाकिस्तान आने से वो कतराते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं. क्या तब्दीली देखी गई है, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. एंड आई एम श्योर आप जिलियन को भी गाइड कर पाएंगे कि पाकिस्तान में वो कहाँ घूम फिर सकती है, बिकॉज जिलियन इज़ अ बिजी गर्ल. She's been working a lot. She's had no time for pleasure or to go around and have some fun in the up northern beautiful mountains of Pakistan. So, well, Gillian, tell us your story. 3.5 years here. How did you end up in Pakistan? Good question. Everybody wants to know. Absolutely. वो मिलने के बाद ये सबसे पहला सवाल. पाकिस्तान कैसे आएगा? पाकिस्तान कैसे आए? Actually, पाकिस्तान से पहले मैं साउथ कोरिया में रही. इससे पहले कंबोडिया. वैसे वो मैं साउथ कोरिया में रही थी और मुझे एक मौका आ गया कि पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस के लिए टॉक देना इस्लामाबाद में. सो दैट वाज 2017 में और मैं आ गई 3 दिन के लिए, बस 3 दिन के लिए इस्लामाबाद. Serena Hotel में I stayed in Serena Hotel. But when you ended up here in Pakistan, okay, what were you told about Pakistan? And how did that perception change? So, honestly, you won't believe me, but आने से पहले मेरा पास कुछ ख्याल नहीं था पाकिस्तान के बारे में. कुछ नहीं. वैसे You didn't hear anything at all? नहीं, वो सुन तो है, obviously you hear various things on the media, but like मुझे पता था कि वो जो मीडिया है वो सच नहीं है, क्योंकि वो पहले कंबोडिया में रही. तो मुझे पता था कि जो लोग कहते हैं कंबोडिया के बारे में वो सच नहीं है. तो मुझे पता था कि वो मीडिया की यकीन नहीं कर सकते हैं. वैसे वो जो they say what they want to say, लेकिन मुझे पता था कि जो असल में वो एक अलग बात ही होगा. So I was just curious. I just wanted to discover कि इसमें क्या है. So everything I experienced was new. It was something that I hadn't thought of or experienced or expected. So, right. So you came to Islamabad. Islamabad. All right. 3 दिन के लिए और वो वैसे वो बहुत अच्छा 3 दिन गुजर गए. वो जो लोग मैंने मिल गए कॉन्फ्रेंस में वो बहुत welcoming, warm as people are here. And everybody said, you're a performing artist, so you must come to Lahore. They encouraged you? Yes. Actually, this was in March, and they said, come now to Lahore. And I said, I can't. मेरे पास काम है South Korea में, उधर वापस जाना है. But I said, listen, invite me again, and I'll come. I'll come to Lahore and see कि क्या है. तो अगला साल ये सारे हुआ. But did you research about Lahore while you were in Korea again? No, see, that's the thing. I didn't at all. वैसे I just said, just invite me back.
I'll come and see what's up. I love how you're very smart about it. You do not believe in the gossip and grapevine that you hear around. क्योंकि That's मुझे a पता smart है thing कि to do. you have to be on site to know what is going You on. got to have hands-on experience. Exactly. Right. So when did you receive the next invitation then? That would have basically we were working on it throughout the year. Right. But I came back in February 2018. Okay. और actually मेरा plan था कि एक साल के लिए trip You wanted to wind up your projects in Korea. in South Korea. Exactly. So इसके सारे wind up हो गए और मैं यहाँ आ गई. मेरा ख्याल था 2 महीने के लिए, 2-3 महीने. Enough to see what's happening. How do you laugh now when you think about that, thought that came to your mind? कि 2-3 महीने, turns out 3.5 years. Honestly, this happened to me in Cambodia. वहाँ मैं गई 6 महीने के लिए और 3 साल हो गए. तो it's my style कि वो अपने जो मेरा plan है वो नहीं होता. But I came for lovely. 2 or 3 months. But actually, basically आने के बाद तकरीबन 3 हफ्ते के बाद वो performances शुरू हो गए और workshops आ गए, teaching शुरू किया. तो like it was just all of a sudden I arrived and 3 weeks later my schedule was booked. You're like, oh boom, there was Booked. yeah. For like 4 months. तो मैंने कहा था अगर यहाँ से opportunities है, अगर यहाँ से काम है और लोग वो इतने excited है कि वो contemporary dance कुछ सीखेंगे तो क्यों why would I go somewhere else and start from zero? Right. कि अगर यहाँ से कुछ मौका है for the performing arts industry here and for me as well, so And then our history, I mean, going back to pre-partition days, and then combining it with our culture when it comes to performing arts, there's so much to explore. Exactly. And learn and teach at the same time. Exactly. So, Gillian, 3.5 years here. So, you've been in Lahore from the day you arrived, and you are still in Lahore. I am still in Lahore. But you have visited Islamabad. Yes, several times. And Karachi. And Karachi, yes. So, you've been to the big cities. Yes. So, you haven't been able to explore the other beautiful sites, tourist sites of Pakistan. Is that right? No, on via Instagram, my friends' Instagrams, yes, but Right. So I'm sure you're going to, plan something after this interview today, this discussion, as I'd like to call it. 3-4 plans बना चुकी है, लेकिन कुछ वजह के लिए काम आ गए, वो कुछ हो गए और मैं नहीं जा सकती. Right. Well, I'm going to play a small report जो हमने आपके मुल्क पे बनाई है on America, as they say in our language. So you can go and you can view some images and have a little flashback and maybe a little nostalgia and there'll be a little deja vu, I don't know. So I don't know either. yeah, so how about we go and take a look at this small report and see how Gillian reacts to her country when she sees it now.
चिलियन कैसा लगा देख के अपना मुल्क दोबारा? No feelings. क्या कहना चाहिए? Basically, I haven't lived there in 9 years. 9 years? So where were you? I mean, let's go through your timeline. 9 years. Okay. Yeah. So I finished school in 2012, Columbia Right. University. Right. मेरा bachelor's degree हो गए. ठीक. 2012 और सीधे वहीं से कंबोडिया गई. वहाँ 3 साल के लिए. फिर कंबोडिया के बाद मैं साउथ कोरिया गई. वहाँ 2.5 साल और अभी पाकिस्तान आ गए. 9 साल हो गए. और अब गोरी का पाकिस्तान है. गोरी का लाहौर technically, but you know. हाँ. चले पाकिस्तान कर देते हैं. So Gillian, how was it working with professional actors and seasoned actors rather, because I've seen the cast of your TV play and they have a lot of experience. Yeah. How was it? So basically, I am not an actress. I'm not trained as an actor. I've Right. taken classes. Yes. You know, like it's not my training. मेरा training तो बिल्कुल dance में है. बिल्कुल. तो acting मेरे लिए वो एक नया चीज़ है. तो obviously they're more experienced. तो मैं उनको देख रही थी कि कैसे करना चाहिए वो. There's so much stuff about TV acting that I don't know कि eyeline कहाँ है, अगर close up तो आप कहाँ पर देखना, इसकी सारी चीज़ मुझे नहीं पता है. तो मैं उनको, it was very interesting to watch them work, and how they do things. And also, but before the play, I choreographed a film. It's not released yet because of COVID. It was with Sarmad Kusit. Oh wow, that's a big name. Amazing. So I choreographed Kamli, which is not out yet, but that was again, I learned so much. You've achieved a lot here, Gillian, I must say. Thank you so much. I mean, people wait to work with these people for years and years and ages, but you came in and you But conquered. actually, that's exactly my point. कि यहाँ से क्योंकि मेरे पास है जो training जो मेरे पास है, तो I get काफी अच्छे मौके मिलते हैं. Right. I've been asked to take a short break. I don't feel like doing that now because the timeline is getting more and more interesting. And also, I want to convince her with the Kashif Anwar sahab here that Gillian, go out and explore Pakistan. Go and discover Pakistan because it is Gori ka Pakistan, or like as I'd like to call it, ideally. So I'm going to go towards a short break. जब वापस आएंगे तो जिलियन से बात करेंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है. आ गई हैं यहाँ 3.5 साल हो गए और उर्दू बेहतरीन बोल लेती हैं. I'm sure you're enjoying that. But let's talk about it further right after this short break. The perception has changed. Why Julian is here for the last 3.5 years? It means our country is safe. It means we have a lot of potential. It means that in performing arts, she can teach a lot. If this country is not safe, then why China is investing $52 billion here? जो बांग्लादेश को ऑर्डर्स ना मिल सके, जो इंडिया को ऑर्डर्स ना मिल सके, वो पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं after 8 years $25 billion को क्रॉस किया है. It's been remarkable. Yes, we have Gillian here today and Kashif Anwar Sahab, who is President Friends of Economic and Business Reforms. Vice Chairman भी रह चुके हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के. काशिफ साहब के पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए कारोबारी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान कितनी हसीन जगह है, कितनी जगह है मज़ीद डिस्कवर करने के लिए इधर, और जिलियन जहाँ जहाँ नहीं जा सकी उन्हें क्यों और कहाँ जाना चाहिए. वेल काशिफ साहब, let's come to the slightly boring part first. Foreign direct investment stands currently as of June 2021 at $135.4 million. मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्लाइन था, लेकिन ओवरऑल नेट इंक्रीज देखा गया है. इससे इंडिकेट किया जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का कीन इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, स्पेशली जब से सीपेक अनाउंस हुआ. चीन से तो देखा गया इंटरेस्ट, लेकिन साथ साथ मज़ीद और फॉरेनर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए. आपने कितनी तब्दीली देखी इस ट्रेंड में
on your personal, based on your personal experience? देखें, अगर आप पिछले 2 से 2.5 साल में देखें तो यस, हमें पॉजिटिव देखना है। और लेकिन कोविड, पिछले 2-2.5 साल से कोविड चल रहा है और उसमें हमारी बहुत सी जो इंडस्ट्री थी उससे बहुत बड़ा एक झटका लगा। आपकी इंडस्ट्री बंद हुई, आपको इंपोर्ट्स बाहर से ज़्यादा करनी पड़ी। अल्टीमेटली अवर गवर्नमेंट ट्राइड to increase the exports and reduce imports. However, they couldn't do it. चूँकि इंडस्ट्री का ये आया, कोविड की वजह से आया। लेकिन yes, the complete world is hit. और अभी भी जो 4th वेव चल रही है उसमें भी अभी करंटली हमने फिर देखा है कि बाहर के ममालिक में फिर वहाँ लॉकडाउन्स फिर लग रहे हैं। इसलिए इन माई पर्सनल ओपिनियन इफ़ यू से कि एफडीआई को इम्प्रूव करना चाहिए था या एफडीआई ने इम्प्रूव उस तरह से नहीं किया, ये चीज़ें तब होती हैं जब सब कुछ नॉर्मल होता है, कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। और ऑब्वियसली दुनिया को एक पेंडेमिक ने हिट किया है, तो इसमें कोई डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं, ना डोमेस्टिक फैक्टर है और ना ही हमारी गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पाई। गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट और अभी भी जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं और जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप हमारे मुल्क के अंदर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें और सारा पैसा वो भेज रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान में एक बायर जो था, फॉरेन बायर, आपसे आके मीटिंग नहीं करना चाहता था। वो कहते थे आप दुबई मिलें या कहीं और मिलें। लेकिन वो चीज़ अब बदल गई है, वो आ रहे हैं यहाँ पे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज द परसेप्शन कि हमारे मुल्क में शायद वो महफूज नहीं है। एब्सोल्युटली, ये इंप्रेशन दिया जाता था और इंटरनेशनल मीडिया इस पे बहुत काम कर रहा था कि डोंट गो टू पाकिस्तान, रादर द टैंक्स आर मूविंग इन द स्ट्रीट्स। वहाँ पे उन्हें एडवाइजरी, उनकी जो सिक्योरिटी एडवाइजर, वो कहते थे कि आप ना, दे वुड एडवाइज यू देम रादर नॉट टू कम टू पाकिस्तान। लेकिन वो चीज़ अब तब्दील हो गई। Yes, it has changed. The perception has changed. Why Julian is here for the last 3.5 years? It means our country is safe. It means we have a lot of potential. It means that in performing arts, she can teach a lot. अब अगर जो देखेगा कि जूलियन यहाँ पर हैं, फॉरेनर्स भी देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग भी देखेंगे कि अगर जूलियन कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट उर्दू, सो शी इज़ अ पाकिस्तानी ऑल्सो when she says that I am very comfortable here। और वो बता रही थी कि जी मैं गई हूँ इस्लामाबाद भी और मैं गई हूँ कराची भी, and I am in Lahore for the last 3.5 years, right? So she is safe. Absolutely. The perception this interview will give, it means that Pakistan is a very safe country. It is very good for investors, it is very good for foreigners. Anyone can come here. If she is a lady and she is alone in Pakistan, means that there is no danger. अब मैं इस इंटरव्यू से जूलियन के जो एक चीज़ साबित करना चाहता हूँ कि जो हमारा नेगेटिव इमेज है, जो हमारा एक परसेप्शन है, जो हमारा एक नेगेटिव लिंक दिया जाता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, ये एक सेफ़ मुल्क नहीं है, इट हैज़ ऑल गॉन। पाकिस्तान इज़ अ वेरी सेफ कंट्री। यहाँ आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और देखें, हम अगर ये कहें कि अब जैसे चाइना यहाँ पर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, बाकी ममालिक ने भी कहा है कि वो CPEC में इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस? इफ़ दिस कंट्री इज़ नॉट सेफ, देन व्हाई चाइना इज़ इन्वेस्टिंग $52 billion here? Absolutely. Now that's a very very huge chunk of our हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप देखते हैं। लेकिन दूसरे ममालिक उधर से, आप हम सिर्फ यहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रही हूँ कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तो वो आ रहे हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में अपना स्टेक डाल रहे हैं, हिस्सेदारी कर रहे हैं। ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट काशिफ साहब? SME में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हो रही है। SME में भी मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तो चाइनीज़ को ही देखा है कि वो SME में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन देखें, हमें कुछ बातों को ये भी देखना है कि जो दो इनपुट कॉस्ट है वो दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमें देखें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से if you get into that cost of production, yes, your I mean that increases, that's only natural. Ultimately, लेकिन उसके बावजूद देखें, जब आज से 10 साल पहले या आज से 8 साल पहले जब यहाँ पर लोड शेडिंग होती थी, तो आई गेव एन इंटरव्यू एंड सेड
कि do give us the electricity at any cost. We want to run our industries. Absolutely, इंडस्ट्री बंद तो नहीं करनी बंद ना, तो और नहीं बंद हो करनी। गई थी उस वक्त। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इंटरव्यूज में कहा है कि आप हमें लाइट दें, आप हमें गैस दें, जिस मर्जी कॉस्ट पे दें, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री तो चला सकें। तो आज अगर हमारी इंडस्ट्री चल रही है तो देखें इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखें जो भी इसके लूप होल्स हैं, जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं कि हम हाइडल की तरफ नहीं गए, हम कोल की तरफ गए, वॉट एवर इट इज़, मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमें बिजली मिल रही है। Yes. And textile industry ने phenomenal performance भी दिखाई है, and you've been able to at least produce something. Yes, आपके जो बांग्लादेश को ऑर्डर्स ना मिल सके, जो इंडिया को ऑर्डर्स ना मिल सके, वो पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं आफ्टर 8 years $25 billion को क्रॉस किया है। It's been remarkable. Yes, जो it हम is. अचीव करना चाह रहे थे इतने सालों से, लेकिन based on infrastructural issues, Yes, they ये are. मसाइल दरपेश थे। However, that's resolved, और वो परफॉर्मेंस दिखा दी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लेकिन देखें फिर बात ये है कि हम अगर सिर्फ ये कहें कि हम अगर सिर्फ टेक्सटाइल पे ही एक्सपोर्ट्स को, that's the largest export. is one of the Fine, sector. वो तो हो गया, लेकिन ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को खासकर, कि और नए नए एवेन्यूज़ भी डिस्कवर किए, नई नई चीज़ें डिस्कवर करी हैं, और हम उसकी एक्सपोर्ट में भी जा रहे हैं इस तरह। However, there will be some support required, and with time you will get it. देखें जो सबसे बड़ी बात है ना, गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव रोल है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसीज़ दी हैं यूथ के लिए, और गवर्नमेंट ने जो लोन्स के प्रोग्राम्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द कोविड जो कहा कि अगर आप ले ऑफ्स नहीं करेंगे तो हम आपको इजी लोन्स देंगे। यस, इट वाज रिमार्केबल। और हम आपको सैलरीज देंगे, हम आपके अगर आपके बैंकों में आपने लीज़ कर रखे हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने 2 से 3 साल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया। तो देखें इसकी वजह से ही हमारी जो इंडस्ट्री है उससे शायद बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं हुई। अगर गवर्नमेंट हमें ये सपोर्ट ना देती, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये सपोर्ट ना देता, तो शायद हम बाकी ममालिक की तरह, जैसे इंडिया टेक्सटाइल में कोप नहीं कर सका और पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले, बांग्लादेश को ऑर्डर्स मिले, खुदा ना खास्ता शायद हमें भी ना मिल पाते, लेकिन गवर्नमेंट that kind of support and you got it. yes Right, yes, and yes. it's such good news क्योंकि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस रही है हालिया, वो मिसाली है, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसी एक खुशखबरी आई जिसका हम इंतज़ार करते बहुत सालों से। मेन इशू यही था बिजली और गैस का, रिजॉल्व हो गया। सो मैन्युफैक्चरर्स आर net happy, and net we see good numbers also. yes they are happy। देखें अगर अल्टीमेटली आपको जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं वो मिल जाए, लेबर मिल जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट मिल जाए, तो yes we can work a lot। और हमारे पाकिस्तान में people into the tax net, which is amazing. yes it is increasing day by day। जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं टैक्स। देखें वही बात है ना, परसेप्शन चाहे आपके फॉरेनर्स के लिए हो या आपके लोकल्स के लिए हो। मैं एक और बात भी कहता हूँ कि हमने सिर्फ फॉरेनर्स को ये नहीं कहना कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, हमने अपने लोकल्स को भी ये कहना है कि आपने अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना है। और आप ये देखिए, जिन लोगों के पास पैसे बाहर थे वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ला भी रहे हैं और उन्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना भी है। और मैं तो ये भी कहता हूँ आपके है, चूँकि एक इशू आजकल चल रहा है कि जिनके पास चूँकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट के पास सर्विलेंस बहुत ज़्यादा है, अपडेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं उनके सिस्टम्स, तो ऐसे लोग जिनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं हैं, जिन्होंने अपने सोर्सेज को नहीं शो कर रखा, यस गवर्नमेंट उन्हें चांस देना चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें अपने मुल्क के अंदर। मैं एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन यस बट इज सम वे आउट कि वो आई एम श्योर दे आर कमिंग अप विद सम सॉल्यूशन, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि लोग आके वापस अपना पैसा लाएं। और जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक आप ये श्योर नहीं करेंगे कि आपका जो सरमाया है वो यहाँ पर महफूज है, वो आपके मुल्क में नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली विद द फॉरेनर्स जो पॉलिसीज कार्व आउट की जा रही है उसके मुताबिक लगता है कि कोई ना कोई हल पेश किया जाएगा उन लोगों को जिनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, अश्योरेंस चाहिए कि वो अपना पैसा लेकर आएँ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। और पोटेंशियल बहुत है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हो,
हर जगह अपॉर्चुनिटी है और ग्रोथ दिखाइए इन तमाम इंडस्ट्रीज. स्टॉक मार्केट को आप देख लें, आप देख लीजिए रियल एस्टेट को. We have seen it coming back on track. स्टेट की जो एमनेस्टी दी अभी उससे भी बहुत इन्वेस्टमेंट आई है और अगर वो इसको थोड़ा सा और आसान कर देते तो शायद बहुत ज़्यादा आ जाती. Well, of course, we're all learning the teething issues and we will get there and we are getting better. Inshallah. Like I said, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस रही है, हम उम्मीद खो बैठे थे लेकिन वो उम्मीद की किरण दोबारा जिंदा हो गया ना. टेक्सटाइल आपका सेक्टर बंद हो गया था, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन वो तो 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है. अब वो कमरे में शिफ्ट कर जी बिल्कुल ऐसा ही. जी बिल्कुल ऐसा ही है. Well, I'm going to go towards a short break and when we return, we're going to guide Gillian where to go in Pakistan because there's so much to discover in Pakistan right after this short break. जब मैं बंगरा परफॉर्म करती हूँ तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, बहुत applause देते हैं. They're very appreciative. What motivated you to get into performing arts? Was it something you wanted to do as a child? So I'm right here. Yes. From I started dancing when I was 5. Bangan mujhe bahut pasand the aur aloo arvi is one of my favorites now. Dal, wow, of course. I mean, I don't know. Aloo palak hai, aloo bangan, aloo arvi. राइट काशिफ साहब, तो अब बताइए जुलियन को कहाँ कहाँ पाकिस्तान में जाना चाहिए? देखें, मैं तो जूलियन से ये कहूँगा कि अभी जो अगस्त की छुट्टियाँ आई, आई वॉज इन नतिया गली और शांगला गली. द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट देयर और नॉर्दर्न एरियाज़ को ज़रूर विजिट करें आप. अगर आप actually been to Natya Gali. You have? Yes, I have actually been there. Okay, once. so you've done a little bit. A little tiny bit. Yeah. So how was it a long journey or a short one? No, it was I was just visiting a friend in Islamabad and we went for a day. And how was it? I mean, how did you feel going It was up a very foggy day, so it was very foggy. But like, so you couldn't see the mountains. लेकिन वो इतना visible नहीं था. नहीं, वो mountains visible नहीं था, पहाड़ नहीं देखते, लेकिन वो जो fog है forest के साथ वो बहुत खूबसूरत था. Oh, it must be a beautiful sight. It was just very like magical. Okay, वो जो I love forests, I love trees. So with the fog and like the trees, it was like very pretty. So where else? Trees and blue sky. No blue sky, was foggy, but okay. It was grey, I'm sure. लेकिन वो फिर भी वो अपने charm था वो fog के साथ. Right. अब तो वो हमारा जो है वो तो चाइना के बॉर्डर तक भी जाता है and it is very safe. और Yes, absolutely. बिल्कुल वो बेस कैंप्स तक जाके वो वापस लेकर आते हैं. तो अब ये तो आपको प्लान करना है कि But where else would you recommend? देखिए मरी एंड नथिया गली ये है मेन टूरिस्ट साइट. टूरिस्ट साइट नथिया गली में you see a lot of people own houses there. I'm sure काशिफ साहब भी अपने किसी घर गए होंगे उधर. नहीं जी, मैं होटल में गया था, लेकिन अब तो देखें तो people go and live there for 2-3 months at a stretch in Nathia Gali in many of these areas. However, there's so much to explore now with the new places that are developed there. Naran Kagan, नारायण कागान में बहुत कुछ है, हुंजा में बहुत कुछ है. Nice hotels. अब तो जो मोटरवे जो लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान है, वहाँ पर भी बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं. हाँ, सवाद तो फिर ऊपर चला गया ना, नॉर्दर्न एरियाज में चला गया. लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएं लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान, तो यहाँ पर भी आपके वो जो झील आती है बीच में, कलर कहार, बिल्कुल सॉल्ट माइन, कलर कहार, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है. कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो कुछ देखा, जैसे वो फिल्म जैसे मैंने कहा वो कमली, हमने सोन वैली ज्यादा शूट किया. Oh, really? So I saw that. वैसे you see, I see things for work, not on my own. So you gotta get some work, something that's gonna be shot somewhere up there. Right. अच्छा, नहीं तो अब मेरा सवाल तो ये है कि have you seen complete लाहौर? आपने शाही किला देखा, शालामार बाग देखा, आपने शाही किला देखा, पूरा नहीं लेकिन. But you did get a glimpse of it. Yes. I've been to Badshah Mosque. Probably not. जो कुछ है लाहौर में probably. Did you see the food street? Yes. And how did you like the food? Very good. Yes. Oh, I got to ask you this question. Have you settled with a food palette here? Of course.
You can consume spicy food. Of course. And what's your favorite? So I'm vegetarian now. How amazing! Now. How Like, amazing! yes, 1.5 साल से. Excellent. But actually जो सब्जी है यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे वो सब कुछ actually वो I don't know, बैंगन मुझे बहुत पसंद है और आलू अरबी is one of my favorites now. Dal, Wow, of course. I mean, I don't know, like, आलू पालक है, आलू बैंगन, आलू अरबी. You're a true desi now. Yourself? You cook yourself or? No, some... I can't cook. okay. मुझे नहीं आती पकाना. कुछ I'm भी. sure you don't get the time also Desi to learn. food or Western food कुछ भी नहीं आती है. Right. But no, it's very, very good food. And actually, the spice is not an issue. Not an issue anymore, or was it ever? No, it's not an issue. Actually, South Korea का खाना बहुत ही ज़्यादा spicy है. बहुत spicy है कोरिया का food. Absolutely. So, performing arts, where all have you performed in Lahore? Which places? So when I first came here, I was working a lot with a cultural dance company. मैंने उनके लिए बंगरा perform किया. Actually, No way. हाँ जी, I gotta see that. बंगरा सीखा. I'll send you on my. Was it difficult? Because that's a different version of dance, you see. Definitely. But okay. It's very different. I mean, it's very different. And intense. It is very intense, but I'm very well trained. Like I'm not trying to be pretentious, but like when you have 20 plus years of training, like yes, you can adapt to anything. You can adapt to it. Basically, you know what to look for. Right. Bas. So Lahore में the Alhambra में perform किया. हाँ, उधर तो हुआ होगा बिल्कुल. वहाँ एक नया जगह है, उसका नाम है The Colony. The Colony, yes, The Colony. very good place. मैंने perform किया PC Hotel में, Flatties Hotel में, Royal Palm में. And how do people react after the performance is over, that a foreigner here, even indulging into a different regional, traditional art form, dances? बहुत खुश है, बहुत खुश है. वैसे वो जब मैं बंगरा perform करती हूँ तो बहुत appreciate करते हैं वो लोग, बहुत applause देते हैं. They're very, very, very appreciative, which is fun. And even though like जैसे The Colony में मैं अपनी style perform किया और वो भी बहुत लोगों ने बहुत appreciate किया. You are alone who performs the bhangra, or there is a group of foreigners? With the bhangra, it's me and usually 6 to 8 boys, Pakistani. From Pakistani boys. लेकिन काशिफ साहब आपने नोट किया कि पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स हो जाए, कल्चरल बेस्ड एक्टिविटी हो जाए, या आप कह लीजिए टीवी इंडस्ट्री हो जाए या फिल्म इंडस्ट्री भी, इसमें हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है और ग्रोथ भी देखी. इज दैट राइट? अच्छा, अल्टीमेटली पहले आज से कुछ साल पहले सिर्फ एक पीटीवी एक चैनल होता था और अब आप चैनल्स देख लें और आप किसी चैनल पे भी आप भी देख लीजिए ना. पहले सिर्फ अलहमरा होता था, विच इज अगेन ब्यूटीफुल आइकॉनिक आर्किटेक्चर है उधर का. लाहौर का जो आता है वो ज़रूर देखता है, उधर जाते हैं और सारी तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ उधर होती हैं. लेकिन अब नई नई जगह भी खुली, जिस तरह द कॉलोनी का हमने जिक्र किया. सो मच इज़ हैपनिंग. और अब तो वो शायद शाही किले में भी शायद कुछ दिनों में वहाँ पर एक होता है, और जो मुग़ल एरा में वहाँ कुछ था. I have just heard के yes Chowdhury ने किया, वो Zebonisa, उसने वो सारे. So have you met Nigar Chaudhary and other performing artists? Who's your favorite here? That I won't answer. क्योंकि it's just basically anybody who does performing arts here, you have to respect them, क्योंकि उन्होंने बहुत struggle किया इसके पिछले 10-20 साल के लिए. जो कंपनी मैंने बंगरा के लिए किया, वो जो ओनर है उन्होंने 20 साल के लिए यहाँ से वो अपना कंपनी बनाना के स्ट्रगल किया, और अभी they perform for some of like the biggest conferences and stuff. So anybody who is doing performing arts, you have to respect them, right. Because as a fellow artist, it's a small industry here. Abhi bhi it's growing. Have a mentor. Like it's growing. I'm sure you do. Yes, I definitely have people that I
go-to for advice. You do. Yes. You do. Right. So, what motivated you to get into performing arts? Was it something you wanted to do as a child? So I'm right here. Yes. From you know, I started dancing when I was 5. You had it in you. Yeah. I don't know. मुझे कैसे पता था? मुझे नहीं पता है. वैसे पता था. How does your family feel about you living in Pakistan? They've had 9 years to get used to me living in strange places. Have they ever visited Pakistan, or do they intend to? I understand because of Corona it was difficult. But basically because of Corona it was difficult. My dad doesn't travel very well. उसका कुछ जिस्म के मसला है. लेकिन मेरी अम्मी आएगी. Inshallah. नहीं आएगी. उसकी tickets book हो गए. Good. Also she's coming, so she gotta come on the show too with you. Let's plan that. How about that? But before that, I'm going to show you a few images. एक image होगा अमेरिका का, एक होगा पाकिस्तान का. काशिफ साहब बताएंगे पाकिस्तानी साइड के बारे में, और जिलियन जो है about America. Please let's have a look at it. Do you recognize these places? Anyone, please? Probably it's Wyoming. It's like it's the West. I grew up in the West, so I know what it looks like. This is not Colorado, but right. Kashif साहब, हमारा पाकिस्तान. हमारा पाकिस्तान है तो खूबसूरत, पर isn't it Sawat? Isn't that Sawat? No, it is not Sawat. Okay. I see the coastline there. Could be Balochistan. I don't know. I'm just taking a wild guess. Oh, I've been here. This is. I know that. Yeah. I've been there in the U.S. when I was like 5. Yes. It's really popular, and there's this whole story behind it. I'm not. We might do that in one of our shows. There's Shangri-La Hotel. Shangri-La, yes. Gee. Oh, this is one place you gotta go to, Gillian. Where is it? It's really, really pretty, this hotel, and you gotta go and visit it. But where is it? It's in Skardu, Gillian. Okay. To answer your question, it's in Skardu, and now there's a direct flight there too. Yeah. From Lahore, and it's a good plane. And by the way, if you want to go there, then you got to book your ticket now because it's packed. The flights are packed. Not good to go these days because of the fog and the rain and too many people there. And too many people there. It's okay. I'll go and there's snow. I miss snow. Yeah, no, but it's one of the first hotels, almost the good ones to be built there, Shangri-La. Yeah. So on that note, मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी, and thank you, Gillian. Thank you, Kashif Saab. There's so much more to discuss, but unfortunately, like always, there's a time limit. But hope to have you back, Gillian, with your mother, and we hope that your mother loves and enjoys in Pakistan, and probably you get an opportunity to take her around where you haven't been. So why not? Right. That's the theory. Yes. Thank you, Gillian. Thank you, Kashif Saab. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, एक expat and one Pakistani. I'll see you next week. आप देखते रहिएगा Discover Pakistan.